Dear children, in today's class I will be explaining the summary of this poem, lesson number 12, which is the poem The Auto. Yesterday only I had to send this, but I could not due to some reasons, so I am explaining it. Okay, so before that, yesterday also we discussed this jet set activity. Yes, so in today's life we all are obsessed with all our vehicles, whether it is a scooty or motorbike or cars. Yes, these are the vehicles that we use for our day to day traveling. Yes, so imagine a day without vehicle. आपको एक ऐसा डे इमेजिन करना है जिसमें आप इन सभी व्हीकल्स के बिना हैं, एंड यू हैव टू डिस्कस इट विद योर पार्टनर और विद योर मदर और यू विद योर पेरेंट्स एंड with your siblings. You can discuss this, how would you spend that day, and you can also discuss the benefits and drawbacks. What do you mean by drawbacks? These are disadvantages. Okay, so you have to discuss the benefits and disadvantages of such a situation. Benefits क्या होंगे ऐसे सिचुएशन का जिसमें आपके पास कोई व्हीकल ना हो, और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे जब आपके पास व्हीकल नहीं होगा. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम. सो हियर द स्पीकर ऑफ द पोएट इज, फर्स्ट लेट अस know the speaker of this poem. Who is the speaker? Edgar Guest. Name of the poet is Edgar Guest. Okay, so here it seems that the speaker is quite fond of, means love. He has love of automobiles. He love automobiles. ओके, स्पेशल ही हैज स्पेशल लव फॉर ऑटोमोबाइल्स. यहाँ पर उसको ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा पसंद है. ओके, सो हाउ वी विल कम टू नो बाय द एंड ऑफ दिस पोएम, वी विल कम टू नो दैट एक्चुअली पोएट loves all kind of automobiles. Okay, so how this poet is praising, how this poet is justifying his love for automobiles, we are going to read. Okay, so let us read the first stanza first. An auto is a helpful thing. It love the way. I love the way the motor hums. I love each cushion and each spring. The way it goes, the way it comes. It saves me many a dreary mile. It brings me quickly to the smile of those at home and every day. It adds on to my time for play. So here in the beginning only, poet has just said about helpfulness of the automobile. So what the poet is saying, an auto is a helpful thing. Auto बहुत ही ज़्यादा, auto means here not only auto rickshaw, all kind of vehicles. I told you in the beginning only. ठीक है, so what the poet is saying, auto बहुत ही ज़्यादा helpful है, and poet love the way the motor hums. Okay, poet को जो उसकी आवाज़ है जब उसकी मोटर रन करते हैं. इन प्रीवियस लेसन ऑल्सो वी लर्नड अबाउट वर्ड हमिंग, है ना. हमने हमिंग वर्ड पढ़ा था, विच इज अ साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एनी ऑटोमोबाइल और अ मशीन रन्स. ठीक है, तो उस पर होने वाली जो आवाज़ है दैट इज कॉल्ड हमिंग साउंड. तो जब मोटर जो हमिंग साउंड करती है जब व्हीकल या कोई ऑटो रन करता है, तो उसकी आवाज़ पोइट को बहुत ज़्यादा पसंद है. I love each cushion and each spring, the way it goes, the way it comes. Okay, तो जैसे जैसे हम लोग जर्नी पर जाते हैं, ट्रैवल पर जाते हैं, तो कुछ अगर बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आता है या कोई भी बड़ा सा गड्ढा आता है, तो आपकी जो बाइक होती है या फिर ऑटो होता है या कुछ भी होता है, वो थोड़ा सा उछलता है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो क्या कह रहा है पोएट कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. इट सेव मी मैनी अ ड्रीयरी माइल. ओके, सो इसकी वजह से, ऑटोमोबाइल्स की वजह से हम बहुत ही बड़ा डिस्टेंस बहुत ही कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, और हम डल और बोरिंग जो राइड होती है डल और जो बोरिंग रास्ता होता है उससे हम बच सकते हैं. इट ब्रिंग्स मी क्विकली टू द स्माइल ऑफ दोज एट होम एंड एवरी डे इट एड ऑन टू माई टाइम फॉर प्ले. सो ये हमें जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं या जो पर्टिकुलरली जिस व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या कह रहे हैं कि इसकी वजह से ही मैं उन लोगों के चेहरे पर स्माइल देख पाता हूँ जो कि घर में मेरा वेट कर रहे होते हैं एवरी डे. एंड इट ऑल्सो इट एड्स टू माई टाइम फॉर प्ले, एंड द टाइम दैट आई सेव बाय ट्रैवलिंग फ्रॉम दीज ऑटोमोबाइल्स, इट एड्स अप टू माई टाइम फॉर प्ले. इससे मुझे खेलने का भी टाइम काफी मिलता है. इट कीप्स मी विद माई फ्रेंड इन टच. ठीक है, तो नो जर्नी नाउ अपीयर्स टू मच टू मेक विद मीटिंग एट द एंड. इट गिव्स मी टाइम टू बी अ फ्रेंड. इट लव्स एट डिस्टेंस एंड हैज पावर टू लेंद एन एवरी फ्लीटिंग आवर.
it bears me into country new that otherwise I would never view. So here again he is praising, the poet is praising the praising automobiles, and here also we can show his love for automobiles. What the poet is saying कि मैं अपने friends से भी टच में हमेशा रहता है. I don't have to think whether I should go to meet my friend or not. Okay, and because of these automobiles no journey appears too much. कोई भी journey बड़ी नहीं लगती है. Okay, अगर if I want to meet someone, I don't have to just give them one day or the another day or the another day. I just can give them a time, and at that time only I can meet my friend. It laughs at the distance and has power to lengthen every fleeting hour. Okay, so what here the poet tries to say? Poet is trying to say here that no distance is impossible to cover with these automobiles, और जितना भी लंबा सफर हो उसको बहुत छोटे टाइम में ये ऑटोमोबाइल्स क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं. एंड इट बियर्स मी इनटू कंट्री न्यू, ये मुझे दूसरी कंट्री में भी ले जा. मतलब कंट्री न्यू मीन्स हेयर व्हाट डज दिस कंट्री न्यू मीन्स? टू डिफरेंट प्लेसेस. इट हैज द पावर टू कैरी मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू न्यू प्लेसेस दैट अदरवाइज आई वुड नेवर व्यू, जो कि मैं शायद कभी नहीं देख पाता. ओके, नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा. It's swift and sturdy and it strives to fill with happiness our lives. Okay, so जो इसकी जो smooth, tough and strong and it tries very hard to achieve something, ये जो इसकी smooth, tough और strong जो ride होती है, it fills our life with happiness. ठीक है, हमारी लाइफ को हैप्पीनेस से, मतलब ये पूरी कोशिश करती है कौन? ऑटोमोबाइल जो पूरी कोशिश करते हैं हमारी लाइफ को हैप्पीनेस से फिल करने के लिए. ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग. ओके, व्हेन फॉर द डॉक्टर वी हैव अ नीड इट ब्रिंग्स हिम टू आवर डोर विद स्पीड. यस, डॉक्टर्स की अगर हमें जरूरत पड़ती है, अदरवाइज एनी सर्विसेज इफ वी वांट, अगर उनके पास ऑटोमोबाइल्स हैं या कोई भी व्हीकल है, सो दे वी डोंट हैव टू वेट फॉर देम, वी जस्ट हैव टू आस्क देम एंड दे विल कम टू आवर डोर with that automobile. It save us hours of anxious care and heavy heartache and despair. Okay, तो जब भी हमें कोई सफरिंग्स होती हैं, मीन्स whenever someone is there in pain, और या फिर someone has lost all the hopes, तो हम उनकी जो एंशियसनेस है, उनकी वरिडनेस है, इससे हम ऑटोमोबाइल्स की मदद से बचा सकते हैं. हाउ? इफ समवन इज पेन वी कैन जस्ट टेक देम टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल. यस, विद हमें जो है जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बड़े दूर नहीं लगते. ओके, बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल्स ओनली. इट हैज इट्स फॉल्स but still icing the auto is a helpful thing. So in the last, the poet is saying it has its faults that we discussed in the class yesterday. It has some mistakes or it has some drawbacks also, but still poet wants to admit that the auto is a very helpful thing. Okay, so I hope you all have understood the poem. You have to see the video carefully to understand it. Okay, and you have already written difficult words and word meanings in your notebook. So I'll send these question answers to you on WhatsApp group, and then you can write them in your notebook. Thank you.